अगर हम मान लें कि हमारे पास एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर चल रही है, ठीक है। अगर एक कार स्ट्रेट रोड पर चल रही है तो आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे? स्ट्रेट रोड ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह, राइट? जस्ट पार्डन मी। So you may draw a straight road like that, and then you may draw a car that must be moving on a straight road. And if it is moving on a straight road, you can also see that कि अब ये straight road पे move करते करते क्या इसने अपनी direction change करनी है? नहीं। मतलब इस straight road पे long journeys में कार move कर रही हो तो हम कोई भी दो पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। ए से बी तक कार ने मूव करना है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए जस्ट आप एक एरो इंडिकेट करेंगे, आइदर इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इट इज गोइंग ईस्टवर्ड्स, राइट? ईस्टवर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्टवर्ड। अब ये वाला मोशन जो है ना, ये ईस्टवर्ड मोशन, या अगर मान लो आप इसको एक एक्सेस सिस्टम कंसीडर करो, ये जो डायरेक्शन एक्सेस है, तो इसमें सिंगल एक्सिस के अलोंग ही ईस्ट की तरफ, या इसमें एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें तो इसमें एक्स एक्सिस की तरफ ही ऑब्जेक्ट का मोशन है। चेंज देखो, अब ये हाउ फास्ट और स्लो इट इज मूविंग ना, बट while moving on a straight road, what happens that sometimes the driver applies the brake because it can be some hurdle on the way. Sometimes the driver can speed up the car because there is no traffic on that road, right? So these are the situations in which the driver sometimes speeding up the car and sometimes slowing down the car is change in speed divided by time change or time taken to change the speed. So for example, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से मूव करना है बी तक, रास्ते में कहीं पे भी फॉर लेट्स से कि यहां पर एक सिग्नल आ गया, ठीक है, देयर वाज अ सिग्नल, द कार हैज टू स्टॉप बिकॉज इट वाज अ रेड सिग्नल. So somewhere before the signal, the driver would see the red signal and would apply the brake. जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कार जो है वो will come to stop or will try to stop. The car will stop at the red signal, but when the driver sees the red signal and applies the brake, तो that moment ही कार स्टॉप नहीं हो जाएगी. ओके बच्चा, उस मोमेंट पे कार स्टॉप नहीं होगी बल्कि it will travel a little bit more distance and then stop. Now if I give you the distance as well, let's say you started observing the motion from here. So at this point the distance was something. At point A there was some distance 0 meter, correct? Until here it was the distance it had already moved was the speed was 4 meter per second. So after 2 seconds उसका कितना distance होगा? अगर 4 meter per second के साथ वो move कर रही है तो after 2 seconds obviously 4 times 2 which is 8 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, और 8 मीटर होगा तो 2 सेकंड्स के बाद नेक्स्ट 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स पास हुए हैं तो स्पीड 0 हो गई है ऑब्वियसली. 4 मीटर की स्पीड से मूव करी थी, अब डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा ना. पहले यहाँ पे देखो हर हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 4 मीटर. जब ब्रेक अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस ट्रैवल वुड स्टार्ट टू डिक्रीज. तो 2 से लेके 5 सेकंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका होगा? 3 सेकंड्स के बाद हम कम ही डिस्टेंस लगाएंगे, हम ये वाला नहीं लगाएंगे कि 4 मीटर इन 1 सेकंड. हम ऑलरेडी हो सकता है इन सारे 3 सेकंड्स में हो सकता है 3 मीटर फर्दर उसने कवर किया हो, तो हम 11 मीटर लिखते हैं. एंड 5 सेकंड्स के बाद ये रुक गई, फिर सिग्नल रेड था तो 2 सेकंड लेट्स से द कार हैज टू वेट एंड देन सिग्नल टर्न्ड ग्रीन एंड इट स्टार्टेड मूविंग अगेन. 0 to 3, right? Now the speed it achieved is 3 meter per second. तो 1 सेकेंड में अब यहाँ से ऑनवर्ड हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड में यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 1 सेकेंड में 3 मीटर का. तो हाउ मेनी सेकेंड्स वुड हैव बीन पास फ्रॉम 7 to 12? हाउ मेनी सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स. so 5 times 3 15. तो 11 के बाद 15 मीटर फर्दर वो ट्रैवल कर चुकी होगी. आफ्टर 5 सेकेंड्स फ्रॉम हेयर it would have traveled a distance of 26 meters, and then further onward from B until B it would have traveled the distance until here. It would have traveled the distance of further 3 seconds. So 3 times 3 because in 1 second it is traveling 3 times 3 कितना हो जाता है?
9, तो 26 प्लस 9 इज 35 मीटर्स। तो कार जो है वो टोटल 35 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ना। तो अब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और उस ग्राफ से एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नाउ यू ड्रॉ द पॉइंट्स व्हेन द डिस्टेंस वाज 0 द टाइम वाज आल्सो 0 0 0, and then when the distance was 8 the time was 2 seconds. So you may mark the points of the time, I mean, yeah, you may mark the points of the time with equidistant lines, uh, divisions you can say, 2 4 6 8 10 and 12 14 16, करेक्ट। ये टाइम की वैल्यूज हैं, डिस्टेंस की भी वैल्यूज हम प्लॉट कर सकते हैं with equidistant divisions or lines. 5, I think let's take, yeah, let's take 8 instead, right? That would be better. 8, yeah, because we have less space. So 8 and here 16, here 24 and 32 and 40. Correct. Then we can draw further lines. So it's, if it's a grid, you know that there are very clear divisions and you can mark them all. Now after 2 seconds the distance was 8 meter, and from here to here the speed was constant 4 meter per second. So after 2 seconds the distance was 8 meter. You will draw the point matching to 8 distance and 2 on the time, this point. Correct. Let me draw it a little smaller, this point. And then because the speed was constant, you know that the distance time graph, in the distance time graph, constant speed is shown by a straight line. So it should be a straight line, right? What should be the next? Now the speed started to decrease. The distance was 11 after 5 seconds. So 5 seconds यहाँ पे in between 4 and 6 हो रहे होंगे ना, यहाँ पे कहीं पे 5 seconds हो रहे होंगे. The distance was 11 and it gradually decreased. I mean, not the way the speed gradually decreased, but the distance the car was traveling every second started to decrease. Okay, the distance the car was traveling every second started to decrease. उसका मतलब क्या होगा, 8 और 16 के बीच में कहीं 12 होगा इधर, और 12 से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 11. अब 11 और 5 वाला पॉइंट अगर हम मैच करें तो पहले हम देखते हैं पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं, ये कर्व्ड होगा. पहले ऐसे ही जा रहा था. द डिस्टेंस द कार वाज ट्रैवलिंग एवरी सेकेंड स्टार्टेड टू डिक्रीज. हर सेकेंड वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करी थी वो डिक्रीज हुआ है. मतलब 4 मीटर का करी थी तो अब 3 करेगी, फिर 2 पर 0 कर देगी, राइट? तो अब ये कर्व्ड में ऐसे आएगा ग्राफ, like that you have to draw, showing the distance which was traveled by the car, or which the car was traveling, is now, the change in distance is actually decreasing, because velocity or speed itself is change in distance divided by time change, or distance traveled divided by time change. अब ये distance 11 ही रहा next 7 seconds तक, after until 7 seconds. 7 seconds कहाँ पे होंगे? 6 और 8 के बीच में यहाँ पे. तो नेक्स्ट जो पॉइंट आप ड्रॉ करेंगे वो होगा यही वाला. आगे इसको मैच कर देना है इसके साथ. द ग्राफ went flat like that. ठीक है, until 7 seconds it went flat. and then यहाँ पे हमारे से एक चीज थोड़ी सी हमने कर दिया कि हमने जो है वो काफी ज्यादा चेंज इन डिस्टेंस ले आए, जो कि ये नहीं होना चाहिए. why it shouldn't be 26? because the car speed was increasing. it was not the moment एक्सेलरेटर पुश किया तो ही नेक्स्ट मोमेंट ही 3 मीटर अचीव हो गई, और यहाँ पे पहुंच के 3 मीटर अचीव हुई ना, तो उसके बाद वो 3 मीटर ही रही. उससे पहले तो कम होगी ना, 0 से 0.1 0.2 0.3 4 5 इस तरह का फिर डिस्टेंस भी कवर हो रहा होगा, 0.1 का, फिर 0.25 का, या 1 मीटर या 2 मीटर, फिर जाके 3 हुई होगी. तो इसका मतलब हमें ये 26 नहीं, आई मीन 11 मीटर से आगे 15 मीटर ऐड नहीं करना चाहिए आफ्टर 5 सेकेंड्स, कम करना चाहिए. क्योंकि द नेक्स्ट मोमेंट ही वो तो तब होता जब इधर से इधर तक ही हम
3 मीटर की स्पीड कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि 15 तो नहीं, ऑब्वियसली 15 से काफी कम। लेट्स से कि यहां से इस टाइम तक 7 सेकंड से 12 सेकंड्स तक जस्ट फर्दर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो लेट्स से 7 मीटर हुआ। ठीक है, 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर हुआ तो 11 में फिर 7 ऐड कर लेते हैं, वो हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, नाउ दैट्स अ काइंड ऑफ अ करेक्ट करेक्ट गैस, बिकॉज यहां से यहां तक फिर स्पीड जो है वो इंक्रीज करी थी। वी आर जस्ट टेकिंग एवरेज स्पीड टू राइड द 26 मीटर। अब यहां से आगे जो है ना 12 से लेके 15 सेकंड्स तक स्पीड 3 ही रही। इसका मतलब 3 मीटर एवरी सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 9 फर्दर होगा, 18 प्लस 9 27 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 मीटर। ओके, 27 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। 7 सेकंड के बाद 12 सेकंड्स कहां पे हैं, यहां पे, और डिस्टेंस कितना हो चुका है, 18। तो 16 और 24 का मेड जो है वो 20 होगा यहाँ पे, और 20 और 16 का मेड जो है वो 18 होगा। तो दिस वुड बी 18 आई थिंक, एंड 18 को और 12 को मैच करेंगे तो अब ये ग्राफ भी आप स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि स्पीड, आई एम सॉरी, स्पीड वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 3, करेक्ट। ये है आपका 12 और 18 वाला पॉइंट, राइट। तो आपने फिर क्या करना है, नेक्स्ट मोमेंट उसने स्पीड अप करना शुरू किया, सॉरी, तो उसने स्पीड अप करना शुरू किया, तो ये विल डू लाइक दिस, या probably you'll do like this। उसके बाद क्या हुआ, फिर 18 से 27, आफ्टर 15 सेकेंड, 15 जो है वो यहाँ पे होगा इन बिटवीन 14 एंड 16। 27 जो है वो 24 और 32 के मिड में 28 होएगा इधर, ठीक है, और इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। ऑन द ग्राफ पेपर यू वुड हैव अ वेरी वेरी क्लियर डिविजन्स फैक्टर, so you may not feel confused there about drawing the graph। I'm sorry, just give me a second। तो this would be 15, I'm sorry, 15 is here, not quite, not that quite much neat, but I tried। So अब जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, little bit like that। Now clearly you can see दो जगह पे स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ये और एक ये। लेट्स नाउ ब्रेक दैट जर्नी इनटू पार्ट्स। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राफ पेपर में, ग्राफ पे P Q R S और T। कहां पे अब क्वेश्चंस क्या होंगे, अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है। पी पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, बट ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी ग्रेडियंट इस स्ट्रेट लाइन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, आई मीन ज्यादा है, क्योंकि इसकी दिस लाइन इज मोर स्टीपर, करेक्ट। सो नाउ यू विल एक्सप्लेन, लेट मी draw these let me write these formula there, and then I'll explain this was the number 3 thing, v is equal to uh, d over t, distance traveled divided by time taken, na? So v is equal to change in distance. Obviously when the car is moving the distance will change, divided by delta t, change in time. And then we had the fourth one was acceleration, a was a was equal to delta v divided by delta t, change in speed divided by time change, correct, where v was the change in distance divided by the time change। now अब हम इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देंगे फॉर दिस कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। पार्ट्स ऑफ द जर्नी को हम एक्सप्लेन करेंगे, पार्ट्स
of journey, और उनकी explanation देते हुए we will also write the reason behind that as well, that why on this part what kind of motion is observed. Correct? So at P, the first is like this one: P, constant speed. Why it's a constant speed? Why it's a constant speed? क्यों constant speed है? क्योंकि gradient जो है वो of the straight line remains constant, and gradient tells us the speed. Correct? So ये gradient of the straight line, you'll get gradient of straight line. Then next Q. Q में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी कार पहले, अब वो डिक्रीज होने लग गया. आई मीन चेंज इन डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो सेकंड पार्ट क्या है? Q is distance is decreasing, speed is decreasing. It shows that from here the curved part, it's a deceleration. Okay, deceleration. How from the graph you get to know that curve with decreasing gradient? क्योंकि gradient क्या है? Speed है. तो curve with decreasing gradient means decreasing speed. Curve with decreasing gradient. Okay, next part, R. R is rest because the distance did not change. It's a flat line, horizontal line parallel to the time axis. It's a rest. Rest. You can also find the gradient of it. Gradient is the speed in this distance time graph. Gradient would be zero. It means the object speed is zero. It's not speeding up. It means the speed is zero. It's at rest or rest. Or part of this journey, or our part of the graph of the journey is rest. Why? Because it's a horizontal line, zero gradient. All right, next S. Now in the S, you'll observe that the curve is such a way that its gradient is increasing from this point of time until this point of time. The gradient is increasing. So the S part you would explain is accelerating. Why? Because acceleration is change in speed, and because the gradient is changing, so there should be a change in speed, and it's such that the gradient is increasing, so there is increase in speed, so it's accelerating. Accelerating. Acceleration. And how do you find acceleration? Curve with increasing gradient. Curve with increasing gradient. Last one, straight line again. So it's a straight line. Again, its gradient is constant. So you would write its constant gradient means constant speed, zero acceleration, constant speed, the T part of the graph, which shows the journey of the car on a straight road. It's a linear motion. So T part is again constant speed, right? And the reason is here gradient of the straight line it is. But we do know that there are in the whole journey of the car, somewhere the car speed was maximum, and it was at the start. Here it was 4, at the end it was 3. Here it's applied the brake, the driver applied the brake, speed was decreasing. Here it's accelerating, but achieved 3 meter speed then, not the 4 which was earlier. And this gradient, the value of the gradient will show you that at the P part the line is more steeper, the gradient will be more. So P, at the P part, maximum speed. Okay, where is the maximum speed? At P part of graph, right? And the gradient will give you
uh, the value of 4 meter per second. ठीक है, that's why it's a maximum speed.